Morning students, today we are going to discuss about string literals. Okay, strings are a group of characters which are enclosed in single quotes, double quotes or triple quotes in Python. In Python we can use triple quotes also. So strings are a group of characters. Okay, any type of character you can use here, any type of ASCII characters, or you can say unicoding characters, or you can say the characters that are present in your keyboard on your keyboard are all you can use for strings. Okay, and you can use single quotes, double quotes or triple quotes. For example, if you are writing like this, or these three are the examples for strings. It is enclosed, the first line is enclosed in single quotes, second line is enclosed in double quotes, while third line is enclosed in triple quote. So these all three are the examples for strings. Okay, now strings are divided into two parts, that is single line strings and multiple line strings or multi-line strings. Single line strings पहले डिस्कस करते हैं. सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स आर दोज विच आर इंक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. ओके, फॉर राइटिंग अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग you will use only single और डबल कोट्स देयर. मीन्स यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, एक लाइन के अगर स्ट्रिंग पास करनी है तो आप सिंगल या डबल कोट यूज करेंगे. Okay, now if you want to write multiple lines, or you can say a paragraph of strings, so here you can't use single or double quotes. For this purpose you have to use triple quoted strings. Okay, these are three lines which you are going to insert in the program or anywhere else. So multiple line strings में आप डिफरेंट ढेर सारी लाइंस यूज कर सकते हैं और उन सारी लाइंस को ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज कर सकते हैं, वाइल सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आप ओनली सिंगल लाइन या सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स को ही यूज कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट साइज ऑफ द स्ट्रिंग. व्हाट विल बी द साइज ऑफ स्ट्रिंग? एनी स्ट्रिंग that is passed in a program, or you can say any string that is there. तो आप कैसे पता करोगे कि उसका साइज क्या होगी? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स that are there and enclosed in single or double quotes or triple quotes. Just count those characters 1 2 3 4 5 6 7, hence the length, or you can say size of the above string is 7. Just okay, and if it is written like this, if some spaces are also available, like a b c, a space is here, at the rate, then space is here, 1 2 3, a single space are there, then these spaces should be counted in the size of the string. Then now the size will become 1 2 3 4 5 6 7 8 9. The size will become 9 here. So to calculate the length of any string, you have to just count the number of characters that are present in that string. It may be numbers, it may be alphabets, it may be blank spaces too. So you have to calculate all these things. Okay, now coming to the numeric literals. Numeric literals are those literals which store the numerical portion, or you can say the numbers. Okay, the number in some data type. तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे किन्हीं नंबर्स को. ऐसी फिक्स वैल्यूज, नंबर्स की फिक्स वैल्यूज को बोला जाता है न्यूमेरिक लिटरल्स. ओके, जहाँ पे हम लोग नंबर्स स्टोर करते हैं. नंबर्स स्टोर करने के लिए वी डोंट यूज the single or double quotes here. Okay, now numeric literals simply
1 2 3 4 5 6 something, any number you can write. These all are numeric literals. Okay, now numeric literals are broadly categorized into two parts, that is integer literal and floating point literal. Integer literals are those which are whole numbers. Okay, no decimal precision is present in this integer literal. No decimal is present or fractional portion is not present in this integer literal. Simply you can write like this: this number is a whole number, it does not contain any type of fractional part or decimal part, so this comes in the integer literal. And floating literals are those which contain the fractional part, or you can say decimal portions, like .89 means 0.89 is here, means कि यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल वैल्यूज को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को, और अगर आपको सिंपली एक नंबर प्रोवाइड करना है तो आप यूज करेंगे इंटीजर लिटरल्स को. नाउ इंटीजर लिटरल्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट्स. Integer literals are further categorized into three parts. The very first one is decimal, second is octal and hexadecimal. Hexadecimal literals, ठीक है. डेसिमल लिटरल्स होते हैं, ऑक्टल होते हैं, हेक्साडेसिमल. डेसिमल मीन्स ऐसी वैल्यूज, ऐसे नंबर्स जिनकी जो ग्रुप बनते हैं 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को. 0 से लेके 9, डेसिमल मीन्स 10. ओके, टोटल 10 टाइप ऑफ नंबर्स आर यूज्ड हियर. ओके, so 0 से लेके 9 means 10 numbers are used here for decimal. So any combination of 0 to 9 numbers can be represented in decimal number. Okay, point to be noted here that these all are integer literals, so complete whole number is here. Okay, complete whole number होगा यहाँ पे किसी भी तरीके का decimal fraction नहीं होगा. Now octa means 8, so 0 to 7, any combination of numbers that are present between 0 to 7 are come under category octal. Okay, and hexadecimal, this is the combination of hexa and decimal. Hexa means 6, decimal means 10, means total 16 types of characters, or you can say numbers. Combination of numbers are used here. Okay, 0 to 9 numbers are used for hexadecimal. 0 to 9 numbers are used for hexadecimal, and but it is कितने हो गए, ये 10 है, but A to F alphabets are also used and total will become 16. तो हेक्साडेसिमल नंबर्स में कॉम्बिनेशन यूज होता है 0 से लेके 9 न्यूमेरिक वैल्यूज का और A से लेके F तक के अल्फ़ाबेट्स का. ओके, तो अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो जो करंटली आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, सिस्टम के आईपी एड्रेस होते हैं या फिर आपके मोबाइल फ़ोन का आईपी एड्रेस होगा, नोट करिए, देखिए उसे. दैट कंटेन्स combination of numbers as well as alphabets. Okay, alphabets can't exceed after F, and the numbers are the ranges between 0 to 9. So this is complete picturization of integer literals. Integer literals are further categorized into decimal, octal and hexadecimal literals. And floating point literals are those which contains the fractional part or decimal part. Okay, example will be 989.49. if it is written, then 0.49 here it is a fractional part, or you can say decimal part. That's why it comes under the floating point literals. Now coming to the next portion, that is Boolean literals. Boolean literals are those literals which have only two fixed values, that is
one is true, another one is false. Only true and false values are present in Boolean literals. This Boolean literal is used in conditional statements where we find whether the condition is true or false. So Boolean literals are used there, and in various other programs and systems we can use Boolean literals to find whether a value is true or false. Another one more literal is there, that is none literal. NONE, none literal. None is a special type of literal which represent nothing, means it does not contain any type of value. For example, if you are inserting some values in program, and suppose you are inserting marks of any student, and currently you don't know the exact marks of that student. Okay, so you can't write any absurd value here. ओके कोई भी एब्सर्ड वैल्यू एंटर मत करिए, और वहां पे जीरो भी मत एंटर करिए. जीरो इज अ वैल्यू एंड एनी एब्सर्ड वैल्यू इज ऑल्सो अ वैल्यू. सो इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल एट दैट टाइम, देन इंसर्ट नन देयर. ओके, नन मीन्स जब आप नन एंटर करते हैं मीन्स कि वहां पे कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, और वो वेरिएबल भी एक तरीके से इनिशियलाइज हो जाता है. यू कैन यूज दैट वेरिएबल इन फॉर फर्दर ऑपरेशंस. ओके, तो नन वैल्यूज का एक इम्पॉर्टेंट रूल ये होता है कि हम कोई एब्सर्ड वैल्यू या फेक वैल्यू एंटर करने से बच जाते हैं और उन वेरिएबल्स को आगे फर्दर यूज कर सकते हैं. Now we discuss about operators. Operators are those tokens, or you can say symbols, that are used to perform some operations on some variables as well as some values in the program. Okay, so operators are tokens that trigger some computation action when applied to a variable or other objects in an expression. किसी भी expression में जो आपके ऑब्जेक्ट्स या फिर वैल्यूज या वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये डिसाइड होता है ऑपरेटर्स से. ओके, ऑपरेटर्स आर दो सिंबल्स और यू कैन से टोकन्स विच आर यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस इन द एक्सप्रेशन. ओके, दोज एक्सप्रेशंस कंटेन्स मल्टीपल वेरिएबल्स और some variables. Now these operators are divided into two broad categories, that is unary and binary. Unary operator and binary operator. Unary operators are those that performs or that took place on one variable or one object of the program. Okay, and binary means two मतलब यहाँ पे more than two, only two variables can be used. मतलब the operator will be used between two variables. For example, for unary operator you can write like this. Okay, plus, and here a plus unary operator, only one operator is used with one variable. Now binary operator you can write like this, a plus b. So a plus b here is a binary operator because two variables, or you can say two operands are used and one operator is used between these two operands. And one more example for unary is not, means a not. If you are writing like this, a not means a and not, so only one operator and one operand is used here, so it is also comes under the category of unary operator. Now binary operators are further categorized into some more categories. One is arithmetic operator, then identity operator, relational operator, assignment operator, logical operator, and membership operator. First is the arithmetic operator. Arithmetic operators are those operators which are responsible for performing arithmetic operations. Arithmetic operations means
addition, subtraction, division, multiplication, these are the arithmetic operators. And some more operators, that is modulus, exponent, fluid division, ये भी यहाँ पे होते हैं. Okay. Exponential sign. So these all operators that performs the arithmetic operations on the operands are known as arithmetic operator. Now identity operator. Identity operators, there are two identity operators, in and not in. In and not in, sorry, is and is not, sorry, is and is not are the identity operator. is and is not ये दो ऑपरेटर्स हैं जो कि दो ऑपरेंड्स में यूज होते हैं. A is B. If you are writing like this, it will give you true or false value whether A is identical to B or not. Okay, if it is true, A is identical to B, then it will give you true value, otherwise it will give you false value. Relational operators. Relational operators are those operators which perform some relational operations like less than, greater than, less than equals to, less than equals to, ठीक है, equals to, or you can say double equals to, and these all are relational operators. यहाँ पे दो ऑपरेंड्स के बीच में A is greater than B, if you are writing like this, तो दो ऑपरेंड्स के बीच में क्या रिलेशन है, वन एंड सेकेंड ऑपरेंड के बीच में व्हाट द रिलेशन एग्जिस्ट, वो इस ऑपरेटर से पता चलता है. तो यहाँ पे इसको एज इट इज यूज किया जाता है और इसमें कोई भी रिलेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं. देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स. असाइनमेंट ऑपरेटर में आप सबसे पहले वैल्यू असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं उनको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर. द वेरी फर्स्ट ऑपरेटर दैट यू यूज फॉर असाइनिंग ऑपरेटर इज इक्वल्स टू, यानी a इक्वल्स टू 10. इफ यू राइटिंग इक्वल्स टू देन a इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे इक्वल्स टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. 10 वैल्यू इज असाइन टू वैल्यू a, तो equals to is the assignment operator here. Further, this assignment operator is further used in some more forms. इनके और भी forms होते हैं like a plus equals to 10, like this, plus equals to, minus equals to, division equals to. इसका मतलब होता है, इन सब का मतलब होता है, अब देखिए a plus equals to 10 means a equals to a plus 10, a minus equals to a minus 10, a equals to a divided by 10, and a equals to a multiplied by 10. So these are some various forms for the assignment operator. Now coming to the logical operators, some more logical operations. You have learned that in arithmetic and logic unit of the computer a logical unit is there. So that logical unit जो वहाँ पे यूज होती है वो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं. दोज आर एंड और नॉट. ये तीन लॉजिकल बेसिक तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट. इनकी हेल्प से हम लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. देन लास्ट comes to the membership operator. Membership operators are in and not in. In and not in operators are used as membership operators, means you can find whether any value lies in any series, और यू कैन से एरे. अगर ऐसा कोई यहाँ पे सीरीज दे रखी है और उसमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है कि वेदर दैट वैल्यू इज द पार्ट ऑफ दैट सीक्वेंस, देन इन ऑपरेटर इज यूज्ड. इन मान लीजिए एक सीक्वेंस यहाँ पे दे रखा है, सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस मान लीजिए, ऐसे यहाँ ढेर सारी वैल्यूज दे रखी है, तो ए इन SEQ आप लिखेंगे. ओके,
if A lies in a CQ, it will gives you true, otherwise it will give you false. And इसी का just उल्टा होता है not in. if you writing like A not in sequence means अगर A की वैल्यू सीक्वेंस में नहीं है then it will provide true, otherwise अगर वैल्यू होगी then it will provide true है. Okay, so that's it for today students. You have learned about the operators as well as different literals of the program. Further we will discuss about some more topics of the programs. Okay.